1. Turmoil, noun. अफरा-तफरी, खलबली, हलचल. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. 2. Perpetual, adjective. हमेशा रहने वाला, दायमी, मुस्तकिल. Never ending or changing. 3. Confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 4. Anarchy, noun. लाकानूनियत, इंतशार. A state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling systems. 5. Grim, adjective. कड़ा, शदीद, सख्त, संगीन. Very serious or gloomy. 6. Fractious, adjective. नाफरमान, सरकश, जिद्दी. Typically of children, irritable and quarrelsome. 7. Haunt, verb. ताक़ुब करना, पीछा करना, आमदरूफ्त रखना. Of a ghost, manifest itself at a place regularly. 8. Dominate, verb. गालिब होना, हुकूमत करना, तसल्लुत हासिल करना. Have power and influence over. 9. Stint, noun. लंबा अरसा, रोकना. Be very economical or mean about spending or providing something. 10. Intervene, verb. बीच में आना, मुदाखलत. Take part in something so as to prevent or alter a result or course of events. 11. Fray, verb. झगड़ा, लड़ाई, रगड़ना. Of a fabric, rope, or cord, unravel or become worn at the edge, typically through constant rubbing. 12. Escalation, noun. बढ़ावा, तेजी, शिद्दत बढ़ाना. A rapid increase, a rise. 13. Impunity, noun. सजा से छुटकारा, इस्तिस्ना, आजादी. Exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action. 14. Onslaught, noun. धावा बोल देना, हमला करना. A fierce or destructive attack. 15. Worrisome, adjective. परेशान कुन, तशवीशनाक. Causing anxiety or concern. 16. Resurgence, noun. कुवत बख्शी, नई रूह, हयात नौ. An increase or revival after a period of little activity, popularity, or occurrence. 17. Audacious, adjective. बहादुर, Showing a willingness to take surprisingly bold risks. 18. Patronage, noun. ताईद, हिमायत. The support given by a patron. 19. Myriad, noun. बेहद, कसीर तादाद, 10,000, बेशुमार. A countless or extremely great number of people or things. 20. Ominous, adjective. मनहूस, बदनाम. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threateningly inauspicious. 21. Confront, verb. मुकाबला करना, सामना करना. Come face to face with someone with hostile or argumentative intent. The challenges ahead. Zahid Hussain. Dawn editorial, with Urdu translation. Published December 28, 2022. Subscribe your own channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. It has been a year that one would like to forget. It has been a year of political turmoil, worsening economic crises, and the return of terrorism. The perpetual state of confrontation among political forces and the virtual collapse of state institutions have pushed the country close to anarchy. With the prospect of sovereign default staring us in the face, the outlook for the economy seems extremely grim. Pakistan faces daunting internal and external challenges ahead. Can we come out of these predicaments in the coming year? It is a dismal scenario as we enter the new year.
The PDM government's balance sheet has certainly not been encouraging. The fractious coalition does not seem to have the capability to take the country out of its difficulties. Its failure to take rational decisions has deepened the economic crisis. The internal discord has further undermined its ability to improve and course correct. Pakistan is now confronted with the specter of economic collapse. We are already in a default situation, with negotiations with the IMF on the bailout package on hold. Our foreign exchange reserves have fallen to a new low, raising questions about the country's ability to meet its external debt servicing obligations. It is an extremely alarming situation, with no sign of any fundamental change in the economic outlook. It is not just external debt, but also a ballooning internal debt that has brought the country close to bankruptcy. The fractious coalition does not seem to have the capability to take the country to safer shores. Pakistan is now among the most vulnerable states. Deronomics has increased our economic woes. Inflation has hit a new high, and our inability to open letters of credit has severely affected our industrial production. Many manufacturing units have closed down or are working partially. The situation has gone beyond the usual patchwork job that successive governments had been doing for so many years. Some external factors, such as the rise in petroleum and commodity prices, have also contributed to the worsening of our troubles, but it is mainly policy flaws that are now coming back to haunt the country. There is little hope of Pakistan emerging out of, arguably, its worst economic crisis in recent times under the current financial team. At stake is the internal stability and national security of a nuclear-armed state. Stabilization of the economy is going to be the biggest challenge for the country in the coming year. While there is little likelihood of early elections, the term of the current National Assembly will end in August anyway. Some 8 months are left for the polls, but continuing confrontation among the political forces will make it extremely difficult to hold free and fair elections. The ongoing political battle in Punjab has further vitiated the political atmosphere. Dissolution of the Punjab and KP assemblies could further destabilize the situation and increase pressure on the federal government. Notwithstanding the military leadership's pledge to stay out of civilian affairs, the shadow of the security establishment continues to dominate the political scene. While intensifying his attack on the previous army chief, whom he holds responsible for everything that went wrong in his less than 4-year stint in government, Imran Khan wants the new army leadership to intervene in order to correct past mistakes. The former prime minister is playing a dangerous game by seeking the support of the security establishment. His and his party's refusal to have talks with the government, or sit in the National Assembly, has weakened the democratic political process. There is always the danger of the military getting sucked into the political fray as the crisis deepens. It will be a test of the military's resolve to stay truly neutral in the power game. In the midst of growing political instability and economic crisis, the return of terrorism has aggravated our security challenges. The latest wave of terrorism has now struck the capital, highlighting the resurgence of the outlawed militant network operating from across the border. Last week's suicide bombing in Islamabad, claimed by the TTP, is a grim reminder of the spreading terrorist threat reaching the country's power center. Islamabad is now on high security alert. It is a nightmare situation for the country in the face of growing political instability. There has been a dramatic escalation in terrorist attacks over the past few months, with targeted killings, suicide bombings and attacks on security installations becoming a daily affair in Khyber Pakhtunkhwa. In the past 3 months alone, the TTP has claimed at least 141 attacks in the troubled province that borders Afghanistan. Law enforcement agencies have been the main target of the terror group, which seems to be operating with impunity. The provincial administration has virtually collapsed in the face of the terrorist onslaught. It's not only KP but also Balochistan that has been hit by the latest wave of terrorism. What is most worrisome is the apparent alliance between the TTP and some Baloch separatist groups. The nexus is seen as responsible for the series of recent terrorist attacks targeting security forces in the western province.
Pakistan's security forces had contained the insurgency to some extent, but the latest spike in attacks indicates that secessionist groups are gaining strength once more. The resurgence of violent militancy also raises questions about our counter-terrorism strategy. We are witnessing the virtual collapse of security agencies in the face of audacious terrorist attacks. The return of Taliban rule in Afghanistan has given impetus to the outlawed group operating out of that country. The recent surge in terrorist attacks inside Pakistan is rooted in the Afghan Taliban's patronage of global terrorist networks. Meanwhile, the country faces a myriad of challenges on the external front. Fast-changing regional geopolitics have had a direct bearing on Pakistan's national security. The escalating tension on our western borders has heightened our security concerns. The worsening relations between Islamabad and Kabul is ominous. How we confront these multiple challenges on the domestic and external fronts will be critical for the country's future. We are once again at the crossroads as we enter the new year. The prospects do not seem to be too promising. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, December 28, 2022. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu Meaning. ये 1 साल हो गया है कि ईद भूलना चाहते हैं। ये साल सियासी अफरा-तफरी, बिगड़ते हुए माशी बहरानों और दहशतगर्दी की वापसी का साल रहा है। सियासी क़ुव्वतों के दरमियान महाज आराई की दायमी हालत और रियासती इदारों के मजाजी खात्मे ने मुल्क को इंतशार के करीब धकेल दिया है। खुदमुख्तार डिफ़ॉल्ट के इम्कान के साथ हमें चेहरे पर घो रहा है, मईशत के लिए नुक्ता नज़र इंतहाई संगीन लगता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। क्या हम आने वाले साल में मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं? जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो ये एक मायूस कुन मंजरनामा है। पीडीएम हुकूमत की बैलेंस शीट यकीनन हौसला अफजा नहीं रही। ऐसा लगता है कि ये मखलूत इत्तेहाद मुल्क को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत नहीं रखता। अक्ली फैसले करने में उसकी नाकामी ने माशी बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। अंदरूनी इख्तिलाफात ने इसकी बेहतरी और दुरुस्त करने की सलाहियत को मजीद कमज़ोर कर दिया है। पाकिस्तान को अब माशी तबाही के खतरे का सामना है। हम पहले ही डिफ़ॉल्ट सूरत हाल में हैं, बेल आउट पैकेज पर IMF के साथ मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर एक नई कम तरीन सतह पर आ गए हैं, जिससे मुल्क की बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की जिम्मेदारियों को पूरा करने की सलाहियत पर सवालात उठ रहे हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, जिसमें माशी नुक्ता नज़र में किसी बुनियादी तब्दीली का कोई इशारा नहीं है। यह सिर्फ बैरूनी कर्ज ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी कर्ज भी है, जिसने मुल्क को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया है। ऐसा लगता है कि ये मखलूत इत्तेहाद मुल्क को महफूज साहिलों पर ले जाने की सलाहियत नहीं रखता है। पाकिस्तान अब सबसे ज्यादा कमजोर रियासतों में से एक है। डार्विनोमिक्स ने हमारी माशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इफरात ज़र एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और क्रेडिट के खतूत खोलने में हमारी नाकामी ने हमारी सनती पैदावार को बुरी तरह मुतासिर किया है। बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं या जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। सूरत हाल मामूल के पेचवर्क के काम से आगे बढ़ गई है, जो पेदर पे हुकूमतें इतने सालों से कर रही थी। कुछ बैरूनी अवामिल जैसे पेट्रोलियम और अजनास की कीमतों में इजाफा ने भी हमारी मुश्किलात को मजीद खराब करने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर पॉलिसी की खामियां हैं जो अब मुल्क को परेशान करने के लिए वापस आ रही हैं। मौजूदा मालियाती टीम की क़ियादत में पाकिस्तान के हालिया दिनों के बदतरीन माशी बहरान से निकलने की बहुत कम उम्मीद है। जौहरी हथियारों से लैस मुल्क का दाखिली इस्तेहकाम और कौमी सलामती दांव पर लगी हुई है। मईशत का इस्तेहकाम आने वाले साल में मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। अगरचे क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत वैसे भी अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात में तकरीबन 8 माह बाकी रह गए हैं, लेकिन सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुसलसल महाज आराई से आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इंतहाई मुश्किल हो जाएगा।
पंजाब में जारी सियासी जंग ने सियासी माहौल को मजीद खराब कर दिया है। पंजाब और केपी की असम्बलियों की तहलील सूरत हाल को मजीद गैर मुस्तहकम कर सकती है और वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकती है। फौजी क़यादत की जानिब से सिविलियन मामलात से दूर रहने के अज़्म के बावजूद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का साया सियासी मंजरनामे पर हावी है। साबिक आर्मी चीफ पर अपने हमले को तेज करते हुए, जिनको अपनी 4 साल से भी कम मुद्दत में होने वाली हर गलती का जिम्मेदार करार देते हैं, इमरान खान चाहते हैं कि नई फौजी क़यादत माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए मुदाखलत करे। साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करके खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उनकी और उनकी जमात की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या कौमी असेंबली में बैठने से इनकार ने जमहूरी सियासी अमल को कमज़ोर कर दिया है। बुहरान के शिद्दत इख्तियार करने के साथ ही फौज के सियासी मैदान में फंसने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। यह ताकत के खेल में हकीकी तौर पर गैर जानिबदार रहने के लिए फौज के अज़्म का इम्तिहान होगा। बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बुहरान के दरमियान दहशतगर्दी की वापसी ने हमारे सलामती के चैलेंजों को बढ़ा दिया है। दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन लहर ने अब दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे सरहद पार से काम करने वाले कालादम अस्करियत पसंद नेटवर्क के दोबारा उभरने को उजागर किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश हमला, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की थी, मुल्क के ताकत के मरकज तक फैलने वाले दहशतगर्दी के खतरे की एक संगीन याद दहानी है। इस्लामाबाद में अब हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र ये मुल्क के लिए एक डरावना ख्वाब है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दहशतगर्दी के हमलों में ड्रामाई इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट कलन, खुदकुश बम धमाके और सिक्योरिटी तनसीबात पर हमले रोज का मामूल बन चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह के दौरान टीटीपी ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल शोरिश ज़दा सूबे में कम अज़ कम 141 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस दहशतगर्द गिरोह का असल हदफ रहे हैं, जो बज़ाहिर बगैर किसी रोक टोक के काम कर रहा है। सूबाई इंतजामिया दहशतगर्दों के हमले के सामने अमली तौर पर मुनहदिम हो चुकी है। ये सिर्फ केपी ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान भी है, जो दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन लहर से मुतासिर हुआ है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि टीटीपी और कुछ बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों के दरमियान बज़ाहिर इत्तेहाद है। इस गठजोड़ को मगरबी सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के सिलसिले का जिम्मेदार समझा जाता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोरिश पर किसी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन हमलों में ताज़ा तरीन इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि अलहदगी पसंद गिरोह एक बार फिर ताकत हासिल कर रहे हैं। पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी का दोबारा उभरना हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली के बारे में भी सवालात उठाता है। हम दहशतगर्दाना हमलों के सामने सिक्योरिटी एजेंसियों के मजाजी खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी की वापसी ने इस मुल्क से बाहर काम करने वाले कालादम ग्रुप को तक़वियत बख्शी है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में हालिया इजाफे की जुड़ें अफगान तालिबान की जानिब से आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती में हैं। दरियासना मुल्क को बैरूनी महाज पर बेशुमार चैलेंजों का सामना है। तेजी से बदलती हुई इलाकाई जुग्राफियाई सियासत का बराह रास्त असर पाकिस्तान की कौमी सलामती पर पड़ा है। हमारी मगरबी सरहदों पर बढ़ती हुई कशीदगी ने हमारी सलामती के खदशात को बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात मनहूस हैं। हम दाखिली और खारजी महाजों पर उन मुताद्दिद चैलेंजों का किस तरह मुकाबला करते हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम होगा। जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो हम एक बार फिर चौराहे पर खड़े हैं। इम्कानात बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं लगते हैं। मजमून निगार एक मुसन्निफ और सहाफ़ी हैं। डान अखबार में शाये शुदा 28 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.